Good morning, students. Welcome back to maths class. Yesterday we have discussed question number 1 to 4. So let's start first of all with question number 6, because question number 6 is same as question number 4. Fine. After question number 6 we will do question number 5. Now, read the question very carefully. Find the cost of painting a square board. Let us suppose this is a square board. This board is a square board and you want to paint it. You want to paint it. Offside 44 centimeter at a rate of rupees 7 per square centimeter. Yesterday, I have discussed this question with Samriti now. So, Samriti, unmute yourself. Good morning, ma'am. Good morning, Samriti. बेटा कल आपने ये गलत बोला था. Now tell me, first of all, tell me according to you, if you want to paint this board, paint, you will apply paint inside means here or in the boundary only. Ma'am, first area of square board is equal to side multiplied by first side. of all, listen to me. मैं जो आपसे पूछ रही हूँ आप उसका आंसर करो. मैं आपसे ना एरिया पूछ रही हूँ ना मैं आपसे पेरीमीटर पूछ रही हूँ. My question for you is, this is a square board. You want to apply paint to it. You will apply paint to inside or in the boundary only. This is my question for you, Samriti. Ma'am, inside. Yes. Paint means we will paint here. Not only in the boundary. Boundary पे तो ये हमारी strip लग जाएगी. ये देखो. No need to paint in the boundary. We will paint the board from here. Here we will paint. Now Samriti, tell me according to you, whenever we are talking about this inside, this surface, then which concept is applicable? Ma'am, area of a square board. Ma'am, formula side First into of side. all, Samriti, listen to me. My question, बेटा, आप क्यों नहीं, मैं आपसे एरिया नहीं पूछ रही हूँ. मैं जो पूछ रही हूँ उसका आंसर करो मुझे. डोंट गो विद क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रही, मैं आपसे जर्नल पूछ रही हूँ. ठीक है. अकॉर्डिंग टू यू विच कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल. बस. मैम, एरिया. बस, दैट्स इट. ओके, फाइन. जो पूछ रही हूँ उसका आंसर करो. नाउ भव्या, अनम्यूट योरसेल्फ. Bhavya, unmute yourself. No. Mehak, unmute. Good morning, ma'am. Yes. Yes, Bhavya, tell me. Mehak, beta, wait. Bhavya, tell me, what is the formula we will use to find the area of square? Side multiply side. Side multiplied by side. Now, to solve this question, what is the first step? Tell me. To solve this question, what is the first step? Cost of. Beta, we will not find cost first. First of all, you will concentrate on concept. Area concept is applicable as Samriti ने बता दिया. Samriti ने हमें बता दिया area is applicable in this question. So you will not concentrate on cost. You will concentrate on area first. So first of all, you will write here given side. Side is given to you. What is the side? 44 centimeter. Area As this question is based on area. So first of all, we will find out the area by applying the formula. Side multiplied by side. So it means area 44 multiplied by 44. You will not find cost. First of all, you will find out the concept. Concept है. Yes, tell me.
The result after the multiplication. 1936. Yes. What? Centimeter or centimeter square? Ma'am, centimeter. No, this is Ma'am, area. The unit of area is centimeter square. ma'am, Centimeter means distance, and distance is the unit of perimeter. Distance is same as perimeter. So centimeter is the unit of perimeter. In area we will write centimeter square. एरिया का मतलब ही स्क्वायर होता है, स्क्वायर. डबल टर्म्स होती हैं इसमें, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड. ओके, नाउ दिस इज नेक्स्ट इज नॉट ma'am, फॉर यू भव्या. Mehak, unmute yourself. Good morning, ma'am. Good morning, Mehak. Tell me the next step. Ma'am, next we will write that What will be right? cost of. Ma'am, we will find the rate of rupees 7 per square meter In the centimeter. second step, we will find the cost and check your book at the rate of rupees 7 per square centimeter. What is the meaning Ma'am, of per means ma'am 1 square centimeter. Yes, very good. So cost of per means 1. 1 square 1 square centimeter is centimeter. rupees 7. This is given to you in the book. बट हमें किसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, जो हमारा एरिया आ रहा है. नाउ यू विल राइट हियर कॉस्ट ऑफ 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर. बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर को ही स्क्वायर सेंटीमीटर बोलते हैं. सो 7 multiplied by 1936. Multiply and tell me the results. Okay, ma'am. Rest of the students, multiply and tell me the results. Write down your results in the chat box. One, 3. So this is 13,552. So in the result, you Ma'am, will the answer write, is 30,552. Yes. In the result, you will write cost of painting. Cost of painting is equal to rupees 13,552. So like this, we will solve the sum. Okay. So students, don't concentrate on cost first. Concentrate on concept. Which concept is applicable? As this question is based on find the cost of painting the board. So we will apply paint here inside. So here inside means the concept of area. First of all, you will find out the area. This is the formula, side multiplied by side for square. Fine. After that, we will go with the cost. Cost of per. Per means 1. 1 square meter is rupees 7. बट हमें किसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, जो हमारा एरिया आएगा. ये आया हमारा एरिया. नाउ द कॉस्ट ऑफ 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 7 multiplied by 1936. So very important sum. You will solve this sum like this. Fine. Note down, and after writing, write them in the chat box. Then I will start question number 5. No issue, Samriddhi, beta. No issue. Yes, Bhavya. ma'am, how to do fifth sum? कराऊंगी बेटा अभी.
Okay. Okay. Now come to the question number 5. Stop writing, everyone. Stop writing. No one will write. Put your concentration on understanding, because question number 5th, question number 7th, and question number 8, all the 3 sums we will solve with same method. Same method is applicable. So stop writing. First of all, understand. Okay. 5th question is, how many slabs of cement are required to tile a platform? Again, the question is based on to apply tiles. Okay, of length 8 meter and breadth 6 meter. If the length of each slab is 4 centimeter and breadth 3 centimeter. This type question you have already done in chapter number 13. सर्कल वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 12, सॉरी चैप्टर नंबर 12, बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में आपने सेम टाइप का क्वेश्चन किया है बेटा, जहां पे एक स्लैब बनी हुई थी. द क्वेश्चन इज टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स. हियर द क्वेश्चन इज टू फाइंड द नंबर ऑफ स्लैब्स. Slabs means big size. Fine. Now, first of all, identify which concept is applicable here. आपको क्या लगता है? If you want to tiling a platform, you want to apply slab to the platform. You will apply slab in the boundary or inside the platform. प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाओगे कि प्लेटफॉर्म की बाउंड्री पे लगाओगे? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. आई एम वेटिंग. वेरी गुड प्रतिज्ञा. इनसाइड. वेरी गुड. ओजस्वी, बाउंड्री पे लगेगी स्लैब. आपके घर में जो टाइल्स लगी हैं वो फ्लोर के ऊपर नहीं लगी, सिर्फ आपने बाउंड्री पे लगाई हुई है. स्लैब्स मींस टाइल. टाइल फ्लोर के ऊपर लगती हैं, बाउंड्री पे नहीं लगती. So the concept of area, it means this question is based on concept of area. Fine. So in this question we have 2 parts. One is platform. Okay. And second is slab. Okay, so first is platform and second is slab, and we will apply the concept of area. Fine. Now in the platform, length is 8 meter, breadth is 6 meter. In slab, length is 4 centimeter and breadth is 3 centimeter. Okay, so this information is given in your book. आपकी बुक में ये information given है. अभी मैंने सिर्फ given लिखा है, कुछ नहीं लिखा. Platform is given, slab is given, length of platform is given, breadth of platform is given. Length of slab is given, breadth of slab is given. Anyone? Now Raghav, unmute yourself. Raghav, are you hearing me? Yes, ma'am. Raghav, according to you, what is the first step in this question? आपको क्या लगता है इसमें first step क्या होगा? To solve this sum according to you, आपको कुछ लगता है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है? राघव, पता है बेटा तो यस बोलो, नहीं पता तो नो बोल दो.
No. Fine. Okay. Method. Agrim. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग अग्रिम बेटा, अकॉर्डिंग टू यू क्या लगता है आपको, इज देयर एनी मॉडिफिकेशन हियर और नॉट? Ma'am, yes. व्हाट, टेल मी. Ma'am, 2 multiplied by length plus breadth. काइंडली रिपीट बेटा. Ma'am, 2 multiplied by length plus breadth. बेटा कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे एरिया का या पेरीमीटर का फॉर्मूला क्यों बोल रहे हो? 2 multiplied by length plus breadth is the formula of perimeter, but this question is to apply slab to the platform. स्लैब प्लेटफॉर्म के ऊपर लगती है. आपके घर में जो टाइल्स लगी हैं वो कहाँ लगी हैं? फ्लोर के ऊपर लगी हैं या सिर्फ बाउंड्री में लगी हैं? Floor के ऊपर. ऊपर. स्लैब मीन्स टाइल. बिग साइज. बिग साइज में जो होती है उनको टाइल नहीं बोलते, स्लैब बोल देते हैं बड़े बड़े साइज में. तो फ्लोर के ऊपर लगी है, तो फ्लोर के ऊपर मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया. बाउंड्री की थोड़ी ना बात हो रही है, इनसाइड की बात हो रही है. प्लेटफॉर्म के ऊपर लगनी है टाइल्स. इट मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया. ये क्वेश्चन ही एरिया का है. अकॉर्डिंग टू समृति, वेरी गुड समृति, yes, well done Samriti. We will do the conversion here. Well done Samriti. All the students clap for Samriti. Only one student gave right answer. Yes, look here. This is meter, meter, centimeter, centimeter. Different units. प्लेटफॉर्म हमारा मीटर में है, स्लैब हमारी सेंटीमीटर में है. डिफरेंट यूनिट्स. With different units, we are not able to solve the sum. So first of all, we will change this meter to centimeter by using the relation. As we know, you know what is the relation now? Write here relation. We know 1 meter is equal to 100 centimeter. This is the relation. Yes. Now, this is 8. Now, in place of meter, look here, meter. Meter is 100 centimeter. So, in place of meter, I will write 8 multiplied by 100 centimeter. So, it means 800 centimeter. Similarly, here 6 meter. 6 multiplied by meter. Again, in place of meter, I will write 100 centimeter. 100 centimeter. It means 600 centimeter. So, this is your first step to make the units same. Different units say we are not able to solve the sum. Now, as this question is based on the concept of area, now we will find the area. First of all, come to this. Now, no need to change it because this is already in centimeter. इसको मत चेंज कर देना, ये पहले से ही सेंटीमीटर में है. चेंज किसको करना है? जो मीटर में है. ये देखो मीटर में. So multiplication with 100, 800 centimeter. Multiplication with 100, 600 centimeter. Now area is length multiplied by breadth. Length multiplied by breadth because this is rectangle. Okay. So length is 800, breadth is 600. So 4, 8, 1, 2, 3, 4 centimeter square. Okay. This is the area of platform. Now come here. Again area is length into breadth. 4 into 3, 12 centimeter square. So platform का area find किया, slab का area find किया. But the question is to determine the how many slabs. So last step,
लास्ट है पेस, number of slabs, number of slabs. To find the number, you will always divide area of platform divided by area of a slab, because this is a slab. Now this, like this. Now do the cancellation. Centimeter square in the numerator, centimeter square in the denominator, centimeter square cut. After that, 12 ones are 12, 12 fours are 48. So this is the result. How many slabs? 40,000. Okay, so like this we will solve the sum. जब भी आपने नंबर फाइंड करना है, you will always write bigger area in the numerator and smaller area in the denominator. प्लेटफॉर्म और स्लैब में से बड़ा कौन है? प्लेटफॉर्म बड़ा है. So area of platform divided by area of a slab. So like this we will solve the sum. Note down. And this is very important sum. So first of all, put your concentration on finding the concept. The concept कौन सा apply होगा इसमें? Now question number 7, question number 8, all are same. Means 7, 8, same like this. We will solve same like this method. Because in both the questions, the question is determine the number. Determine. In this question, determine the number of slabs. 7th question, determine the number of squares. 8th question, determine the number of bricks. Method is same. सिर्फ चेंज हो रहा है, कभी स्लैब आ रहा है, कभी ब्रिक आ रहा है, कभी टाइल आ रहा है. ओके, Kinjal, unmute yourself. Yes, ma'am. Start reading 7th question. Yes, ma'am. Determine the number of squares on a square game board of size 8 centimeter if the side of each square is 1 centimeter. Now, according to you, how can we solve this sum? Which concept is applicable here? Area or perimeter? Ma'am, area. Okay. Now, what is the first step? Ma'am, first we will write the given. Which information is given? Ma'am, side. किसकी side? In this Ma'am, question you square. have, जैसे 5th question में हमारे पास 2 parts थे. One is platform and second is slab. दो चीजें थी ना. इस क्वेश्चन में एक चीज है, इसमें भी दो चीजें हैं. Okay. Tell me. मैम स्क्वायर गेम बोर्ड की साइड है 8 सेंटीमीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल किंजल टेल मी, इन दिस क्वेश्चन आपके पास वन थिंग है कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डबल थिंग्स. ये बताओ मुझे. जैसे 5th क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म था और प्लेटफॉर्म के साथ स्लैब थी,
तो मैंने एक साइड पे प्लेटफॉर्म लिखा था, एक साइड पे मैंने स्लैब लिखा था। ये मैम इसके बताओ अंदर मुझे इस सिंगल है। क्वेश्चन में वन थिंग है कि इस क्वेश्चन में भी फिफ्थ क्वेश्चन की तरह एक डबल है। मैम इसके अंदर एक चीज दी हुई है। अच्छा, क्वेश्चन रीड करना। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑन अ स्क्वायर गेम बोर्ड ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर if the side of each square is 1 centimeter. मैम Each 2। square. तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको? एक तो आपको स्क्वायर गेम बोर्ड दिया हुआ है, एक आपके पास है स्क्वायर गेम बोर्ड, और दूसरा आपके पास है ईच स्क्वायर। डबल है, सिंगल का है, आपके बुक में क्लियरली मेंशन है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑन अ स्क्वायर गेम बोर्ड of side 8 centimeter if the side of each square is 1 centimeter. So double information is given to you. One is square game board and second is each square, like fifth question. In fifth question we have platform and slab. यहाँ पे प्लेटफॉर्म की जगह स्क्वायर गेम बोर्ड है और स्लैब की जगह ईच स्क्वायर है। ईच मीन्स एक स्क्वायर। नाउ side is given here. Side is 8 centimeter and each square board side is 1 centimeter. Double information is given to you in this question. Now, is there any need of conversion? Myra, unmute yourself. Myra, unmute yourself. Very good, Shantanu. Very good, Sara. Yes. Divya, unmute yourself. Good morning, ma'am. Divya, good morning. Tell me, is there any need of conversion here? जैसे हमने fifth question में conversion की थी. No, Why? What is the reason? ma'am, because all the units are same. Very good. Centimeter units are same, so there is no need of conversion. Well done. Now area is, directly you will find the area. Side multiplied by side. Okay. So 8 multiplied by 8, 64 centimeter square. Similarly, come here. Area is side multiplied by side. So 1 multiplied by 1, 1 centimeter square. Okay. Then the question is to determine the number of squares. So number of squares. Number of squares. Tell me the formula, Divya. Square game board divided by each square. Area of square game board. Square game board divided by area of each square. Yes. Divided by area of each square. Each square. Yes. So this is 64 centimeter square divided by 1 centimeter square. Centimeter square cut. So 64 divided by 1 is 64. Same as fifth question. Same. बस क्या था फिफ्थ क्वेश्चन में? फिफ्थ क्वेश्चन में इधर प्लेटफॉर्म था और इधर क्या था? स्लैब। सेवंथ क्वेश्चन में इधर स्क्वायर गेम बोर्ड है और इधर ईच स्लैब है, बट द मेथड इज सेम। देखो मैंने सेम मेथड से की है। एरिया स्क्वायर, उसमें हमने अप्लाई किया था लेंथ इनटू ब्रेथ। व्हाई? बिकॉज लेंथ एंड ब्रेथ डिफरेंट थी। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। फाइन students, note down. Then we will start 8th question. Very good, Divya. And 8th question is also, we will solve also like this. Same.
Eighth question is same as question number 5th and question number 7th. There will be no change. Only the statement change. Fine. Now students who want to reply question number 8, raise your hands. बेटा सेम वही बच्चे हैं और किसी ने रिप्लाई नहीं करना. दिव्या, मायरा, महक, समृति, अगेन एंड अगेन सेम स्टूडेंट्स. और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं बस कि सुन भी नहीं रहे? शिवेन, यस. शिवेन, अनम्यूट योरसेल्फ. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग शिवेन. धीरे बोलो, धीरे, ठीक है? सो स्टार्ट रीडिंग 8th क्वेश्चन. How many bricks are required to build a wall of height 2.88 meter and width 50 centimeter if the length of each brick is 12 centimeter and breadth is 10 centimeter? Now tell me, in this question, double things are given or single thing is given? Ma'am, double things. Name? Ma'am, height, width and length and breadth. No. वो तो गिवन है. मीन्स जैसे 5th क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म था और स्लैब था. 8th क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? Yes, ma'am. Ma'am, length of each brick and how many bricks? No बेटा. How many bricks are required to build a wall of height? Wall. इस क्वेश्चन में आपको एक तो वॉल गिवन है. मैं ये पूछ रही हूँ क्या क्या गिवन है. इस क्वेश्चन में एक तो आपको वॉल गिवन है, ओके, और ब्रिक्स और ब्रिक गिवन है. मैं ये पूछ रही हूँ जैसे 7th क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन में आपको प्लेटफॉर्म और स्लैब गिवन था. इन दिस क्वेश्चन information of wall and brick is given to you. Wall of height. Now wall height is given 2.88 meter. Yes, ma'am. Okay, and Ma'am, width it's is 50 breadth. centimeter. Width is used for breadth 50 centimeter. Okay, and in breadth length is 12 centimeter and breadth is 10. हाँ, 10 centimeter. Okay, तो बेटा ये हाइट गिवन है, कंफ्यूज नहीं होना. लेंथ की जगह हाइट भी लिख सकते हैं. वो फॉर्मूला सेम रहेगा. L इंटू बी होता है ना, तो आप H इंटू बी लिख दोगे. तो कंफ्यूज नहीं होना भी मैम हमें तो हाइट आ गई, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे ही करेंगे जैसे L इंटू बी करते हैं. Now tell me Shiven, according to you, requirement of conversion? Ma'am, no. क्यों? ये मीटर है. Yes, ma'am. मैम मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे. Yes, ये मीटर है. देखो इसको कैसे सेंटीमीटर में चेंज करोगे बताओ मुझे. मैम 2.88 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100. Yes, multiplied by 100 और ये सेंटीमीटर में चला जाएगा. And write the relation here. 1 meter is 100 centimeter. Okay. Now breadth थी ना इसकी given 50 centimeter. Now tell me how can you solve this? How can you solve the decimal sum? Ma'am, by removing decimal. Very good. By removing decimal. So 288 divided by 100 multiplied by 100. 100 cut. So this is 288 centimeter. Very good. Well done. This is decimal. 2.88. So we will solve this sum by removing decimal. As we have two decimal places, 1, 2. So when you will remove the decimal, you will write 100 here. Now all the units are same now.
centimeter, Yes, ma'am. centimeter, centimeter, centimeter. Now let's Yes, ma'am. start. Area. Now you will write your h into b. Because आपको यहाँ पे L नहीं given है, H given है, तो H into B. So 288 multiplied by 50, you will get centimeter square, 14,400. Similarly, area is length into breadth, 12 into 10, 120 centimeter square. Fine. Now again. Yes, ma'am. How many bricks? So you will write here number of bricks. Number of is equal to area of brick and area of wall divided by area of brick. Area of a brick. Okay. Now 14,400 centimeter square divided by 120 centimeter square. Centimeter square cut. Okay. 0, 0 cut. After cancellation or division, you will get 120 bricks. Yes, ma'am. Okay. You will show division, multiplication, everything in figure. जैसे हम आपको हर बार बोलते हैं. So this is division. If you want to divide or cancel, this is your wish, but show each and every step in figure. So these three questions are very, very important questions. First of all, check that which information is given. Like in this question, wall information or brick information is given. So one side you will write wall and second side you will write brick or a brick. This is your wish. Brick लिखो, a brick लिखो, कोई hard and fast rule नहीं है, आपकी मर्जी है. ठीक है? After that, information जो given है वो लिखो. After that, check that is there any need of change, because whenever units are different, then we have to change. Okay? जैसे यहाँ पे मीटर था, तो and rest of the parts are in centimeter. So first of all, we will change this meter to centimeter with the help of this conversion. 1 meter is 100 centimeter. So note down. एंड वन मोर थिंग, बेटा ये वॉल है तो वॉल में ये मत सोचना भी वॉल बाउंड्री में बनती है तो यहाँ पेरीमीटर आएगा. नहीं, जब ब्रिक्स लगेंगी तो ब्रिक्स एक दूसरे के ऊपर ऊपर लगेंगी, ऐसे ऊपर ऊपर, तो एक दूसरे का स्पेस ऑक्यूपाई करना मीन्स एरिया. तो आपने ये नहीं सोचना भी मैम वॉल तो बाउंड्री पे बनती है तो ये पेरीमीटर होगा. नो, ब्रिक्स की बात हो रही है. जब वॉल बनाने के लिए ब्रिक्स लगेंगी तो वो एक दूसरे के ऊपर लगेंगी. इट मीन्स स्पेस कवर हो रही है, ऐसे लाइक दिस. सो एरिया कॉन्सेप्ट. यस अभिनव. मेरा लास्ट क्वेश्चन ही हुआ था. ओके. महक डिवाइड करके आया 120, इसको 12 से डिवाइड करो.